Hello all. Today we will discuss about Knerr repertory, which comes under concordance repertories. So what is concordance repertory actually? The word concordance means a state of being of the same heart and mind, a harmony, or we can say a harmonious arrangement of the symptoms. This word was first used in homeopathy by Dr. Boni Hussain in Therapeutic Pocket Book, but it was later replaced by Dr. Allen as Relationship of Remedies. सो कंकॉर्डेंस मीन्स जहाँ पे प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज को मेंटेन किया गया, जिस लैंग्वेज में पेशेंट्स हमें ड्रग प्रूविंग के दौरान सिम्टम्स दे रहे हैं या क्लिनिक में हमें जिस तरीके से अपने सिम्टम्स बता रहे हैं एज इट इज वही लैंग्वेज को रिपर्टरी में यूज किया गया है. Symptoms are not converted into repertorial language. So concordance repertory are also known as Puritan group of repertories because the purity of the language of the drug proving is maintained. These repertories are analogues to the index of the symptoms as they are presented in the Materia Medica. They are mainly used for reference purpose or research purpose, but they are not good for systemic repertorization. So the two repertories comes under concordance repertory. The first one is Dr. Kelvin V. Knerr repertory and second one is W.D. Gentry's concordance repertory. Dr. C.B. Knerr was born on 27 December 1847 and he was the assistant of Dr. Constantine Herring. He has written many books on Dr. Herring's, like The Life of Herring, which was published in 1940. And he became responsible for the completion of the 10 volumes of Guiding Symptoms of Dr. Herring, Materia Medica. He spent 5 years writing his repertory of Herring's Guiding Symptoms of Materia Medica, which was published in 1896. This repertory to Herring's Materia Medica never saw widespread use. So Dr. Knerr was the assistant of Dr. Herring. Dr. Herring की जो voluminous Materia Medica, because it was so voluminous and it has so many volumes, Dr. Knerr ने Dr. Herring's की Materia Medica को ही repertory form में convert किया है. And the इसलिए जो repertory का नाम है वो repertory of Herring's Guiding Symptoms of Materia Medica ही है. It was published in 1897 and because it is not used for arithmetic calculation or systematic repertorization, it has never saw very widespread use. So Dr. Knerr, during the making of this repertory, he used the same structure throughout as found in the Guiding Symptoms, even including the relationships at the end of the book and giving the remedies the 4 lines of grading, same as Dr. Herring gave in his Materia Medica. This makes for a book that is bulky without being that useful in everyday study. So as a reference repertory or for comparative research, it has its own place, but as Knerr repertory mixes both pathogenic and clinical data, but it also contains rubric that are found nowhere else. Now available in computer also, now it is available in HomePass software. The complexity and difficulty of Knerr repertory have given way to ease of access through simple search functions. He has written many books like Drug Relationships, Repertory of Headache also, Conversation Talks, Life and Time of Herring. So he was his was a life of unceasing work, and even when confined to bed, he actually prescribed for his patients. He died on September 30, 1940 at the ripe old age of 93 years. So now we will discuss about the basic plan and construction and arrangement of Knerr repertory. So, repertory of Herring's Guiding Symptoms of our Materia Medica. It has 48 chapters arranged in Dr. Hahnemann schema and has 408 remedies. Herring's Guiding Symptoms of our Materia Medica forms the basis of this repertory, and Dr. Knerr used the same signs and symbols as given in the Guiding Symptoms. So, plan and construction is, first of all, there is an author's preface, then contents, then list of remedies with their abbreviations. Then we have different chapters, and in the end we have drug relationships, and lastly the index. So in the preface, the order of arrangement followed in the compilation of this repertory is the one inaugurated by Dr. Hahnemann only, developed and perfected and used by Dr. Herring throughout his entire Materia Medica work. That is the anatomical or regional division into 48 chapters. Each chapter is alphabetically divided into sections and rubrics sufficient to allow full scope for the analysis of the matter contained therein without destroying the consistency as a whole.
Then the division of the page is into 2 columns, which is very convenient for the eye and most advantageous to the economy of the space. Alphabetical arrangement is followed throughout the book. Now, the section word is repeated down the column in preference to the customary dash, which, like all marks of abbreviation, cipher, signs, etc., are apt to become confusing and are not as space saving as might be supposed. मीन्स जो भी चैप्टर का जो भी मेन रूब्रिक होगा, जो मेन वर्ड होगा, उसे बार बार सब रूब्रिक्स में दोबारा से रिपीट किया गया है टू अवॉइड द कंफ्यूजन। जैसे हम डॉक्टर केंट्स रिपर्टरी में देखते हैं कि मेन रूब्रिक हमारा दिया हुआ है, जो सब रूब्रिक है वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड है, सब रूब्रिक थोड़ा सा और राइट हैंड साइड है, लेकिन जब हम पेज पलटते हैं या कॉलम चेंज हो जाता है तो हमें वो समझने में दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होती है कि ये मेन रूब्रिक है कि सब रूब्रिक है। तो डॉक्टर नर ने इस डीमेरिट को ओवरकम करने के लिए बार बार जो मेन वर्ड है, मेन रूब्रिक है, उसको बार बार रिपीट किया है। जैसे कि चैप्टर नोज के अंदर द मेन रूब्रिक इज कोराइजा, तो कोराइजा द सब रूब्रिक इज एक्रेट, देन अल्फाबेटिकली उसको रिपीट किया गया, कोराइजा एल्ब्यूमिनस, एक्रेट के बाद नीचे एल्ब्यूमिनस और कोराइजा बार बार रिपीट किया गया। The words right and left, better and worse, etc. to avoid possible error is printed out in full. Again, सिंबल्स यूज नहीं करे गए हैं मोडालिटी शो करने के लिए, या राइट एंड लेफ्ट के लिए अब्रीविएशन यूज नहीं की गई हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और अवॉइड एनी पॉसिबल एरर. The rubric word or a heading to each paragraph is printed in somewhat bold and followed by a colon. Applies to each symptom in the paragraph, that is, the black letter word is to be mentally repeated for every sentence rounded with a semicolon. It will be observed that the most important word in the whole symptom under each rubric follows the alphabetical order. Means जो rubric है वो बार बार रिपीट किया गया है, सेमीकोलन के बाद उसकी सब रूब्रिक लिखा गया है। सब रूब्रिक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे कि मेन रूब्रिक है कोराइजा, सब रूब्रिक इज ब्लडी, राइट। उसके बाद जो है कोराइजा ब्लडी, देन कोराइजा व्हेन ब्लोइंग, तो ब्लोइंग जो है वो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो BL के बाद डबल ओ के बाद BLOW, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो मेन वर्ड है वो दोबारा से रिपीट हुआ है। जैसे कि मेन रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्शन, एलिमेंट्स फ्रॉम, ठीक है, तो मेन रूब्रिक जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये सारे सब रूब्रिक्स में रिपीट किया गया है। सब रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम, एलिमेंट्स फ्रॉम में मेन वर्ड क्या है, एलिमेंट, तो ए से। फिर दूसरा रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्शन, कैन नॉट बेयर, ना इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, बेयर, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी, तो एलिमेंट्स के नीचे फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी। कॉन्ट्राडिक्शन हेडेक फ्रॉम, इसमें मेन सब रूब्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, हेडेक, now it is starting from H. Then contradiction सब रूब्रिक है शडर्स, मेन वर्ड क्या है शडर्स, ये स्टार्ट हो रहा है S से, तो A एलिमेंट्स, B बेयर, हेडेक H एंड शडर्स S। तो जो मेन सब रूब्रिक का जो मेन वर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मेन रूब्रिक है डेस्पेयर, राइट, डेस्पेयर इन मेनोरेजिया, तो मेनोरेजिया जो मेन वर्ड है उसको बोल्ड में लिखा गया है। देन डेस्पेयर इन ओनानिज्म, इसमें मेन वर्ड है ओनानिज्म, तो M के बाद O, ओनानिज्म। देन डेस्पेयर ड्राइव्स टू पेन, ठीक है, मेन वर्ड है पेन, स्टार्टिंग फ्रॉम P, देन पेन, देन पैरालिसिस, देन रेज, रिकवरी, सैड थॉट्स, साल्वेशन, श्रीक्स, सोसाइटी, स्टमक, स्ट्रक्चर एंड सुसाइडल, राइट। तो हर सब रूब्रिक का जो मेन वर्ड है वो बोल्ड में लिखा गया है एंड सब रूब्रिक्स आर अरेंज, जो मेन वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं उस हिसाब से सब रूब्रिक्स लिखे गए हैं। देन देयर आर 4 मार्क्स ऑफ डिस्टिंक्शन अगेंस्ट द रेमेडीज, व्हिच इज सिंगल लाइन एंड सिंगल डबल लाइन, सिंगल बोल्ड लाइन एंड डबल बोल्ड लाइन। तो इसमें प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं है, टाइपोग्राफी यूज नहीं की गई है, लेकिन हर रेमेडी के आगे कुछ सिंबल्स हैं व्हिच इज सेम एज डॉक्टर हैरिंग्स मटीरियल मेडिका। सिंगल प्लेन रोमन लाइन का मतलब है द लोएस्ट, और द सिंगल लाइट लाइन इट डेजिग्नेट एन ओकेजनली कंफर्म सिम्टम। डबल लाइन का मतलब है डबल लाइट लाइन अ सिम्टम व्हिच इज मोर फ्रीक्वेंटली कंफर्म्ड, और if or but was once confirmed strictly in character with the genius of the remedy. सिंगल बोल्ड लाइन का मतलब है सिम्टम वेरीफाइड बाय क्योर्स,
एंड डबल बोल्ड लाइन का मतलब है सिम्टम रिपीटेडली वेरीफाइड। ठीक है, मतलब सिंगल लाइन का मतलब है जो ओकेजनली कंफर्म्ड सिम्टम है, डबल लाइट लाइन का मतलब है जो या तो फ्रिक्वेंटली कंफर्म किया गया है या उसका एक या दो बार ही कंफर्म हुआ है, लेकिन इट इज सिमिलर विद द जीनियस ऑफ द रेमेडी। सिंगल बोल्ड लाइन का मतलब है विच इज वेरीफाइड बाय क्योर्स ऑल्सो, एंड डबल बोल्ड लाइन का मतलब है सिम्टम विच इज रिपीटेडली वेरीफाइड। So these degree marks tallies in the main with the four style of type used by the Dr. Bonigus and Essence Repertory. एक इसमें कई रेमेडीज के आगे सिंबल यूज किया गया है थीटा, which is between the cure symptom and the pathological condition or the physiological general state throughout the guiding symptom is dispensed with there mainly for the purpose of economizing the space by enclosing the pathological or physiological term in parentheses. It is to be remembered that the presence of the term by no means shuts out the usefulness of the symptom in other form of disease. थीटा को ज्यादातर यूज किया गया है मटीरिया मेडिका के अंदर डॉक्टर हेरिंग ने, जहाँ पे रेमेडी के सिम्टम्स लिखे हुए थे वहाँ उन सिम्टम्स के आगे थीटा लिखा होता है। मतलब ये वाला जो सिम्टम है ये इस तरह की फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें मिलता है। दिस इज टू अंडरस्टैंड द कॉमन और द अनकॉमन सिम्टम्स। उस थीटा को ही जब रिपर्टरी डॉक्टर नर ने बनाई है तो डॉक्टर नर ने थीटा की जगह ब्रैकेट यूज की है। जैसे कि रूब्रिक है कोराइजा ग्लूटेनस ड्राइंग इन पोस्टीरियर नेयर्स, और ब्रैकेट में लिखा है ओजीना, मतलब ग्लूटेनियस कोराइजा विच इज ड्राइंग इन पोस्टीरियर नेयर्स इज कॉमन इन ओजीना। सो अगर पेशेंट के अंदर ओजीना का ही केस है और ये सिम्टम मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉमन मिलेगा, मगर एक्सक्लूडिंग दैट अगर पेशेंट की ये करेक्टरिस्टिक है तो ये बहुत ज्यादा पिक्यूलियर बन जाएगा। जैसे कि रूब्रिक है लीवर सेंसिटिवनेस टू क्लोथिंग इनड्यूरेबल अनइंड्यूरेबल, सो ब्रैकेट में लिखा है जॉन्डिस, मतलब दिस सिम्टम दिस sensitiveness, this type of sensitiveness, this type of tenderness is common in jaundice. So कोई भी सिम्टम जो कहीं पे हमको फिजियोलॉजिकल स्टेट में या पैथोलॉजिकल स्टेट में मिलता है कॉमन होता है उसको ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमको रूब्रिक्स उठाने में इजिली हेल्प होती है कि हम कॉमन उठा रहे हैं कि अनकॉमन उठा रहे हैं। Then there is a perpendicular dotted line also which marks observation taken from the old school such as harmonized with the law of cure. Old school means conventional allopathic therapy system की बात हो रही है। Then कई जगह पे T लिखा है which signifies toxicological extracts. Then there is a line like this symbol is used which means it is observed in the sick only. Then we have a hand which is pointing. This shows the cross reference to the related symptom, diseases and the condition. And in the last, the repertory is supplemented by a complete index of localities and terms. So like this, I have attached the example. This is from the book only. See, this is a hand. So contempt. तो hand में hand के symbol के against लिखा है haughty and pride. So these are the cross references of the contempt. तो contempt के लिए आप haughty या cross reference use कर haughty या pride cross reference use कर सकते हैं। उसी तरीके से कंटेंशियस के आगे क्रॉस रेफरेंस दिया है कॉरलसम, कॉन्ट्राडिक्टरी के आगे क्रॉस रेफरेंस है नीचे एंटागोनिज्म और कॉरलसम, राइट। देन वी हैव कोवर्डाइज विद वीकनेस, वी हैव एंजाइटी, डिस्करेज्ड, फियर्स। सो इस तरह से जो मिलते जुलते रूब्रिक्स हैं या क्रॉस रेफरेंस हैं, रिलेटेड टर्म्स हैं, उसको इस हैंड सिंबल के अगेंस्ट लिखा गया है। ये देखिए जैसे कि रूब्रिक है हेमिक्रेनिया, हाफ साइड ऑफ हेड में पेन हो रहा है तो डेट ब्रैकेट में दिया है मैग्रेन, माइग्रेन एंड सेमिलेटरल हेडेक, मतलब ये सेमिलेटरल जो पेन हो रहा है इट इज कॉमन इन माइग्रेन ऑल्सो, इज कॉमन इन माइग्रेन। ठीक है, अगर पेशेंट को डायग्नोसिस उसका माइग्रेन ही है तो ये कहीं ना कहीं कॉमन है, लेकिन पेशेंट को टेंशन हेडेक है या कब जब भी हेडेक होता है तो वो हेमिक्रेनिया ही होता है, एक ही साइड ऑफ हेड में होता है, देन इट इज बिकम वेरी कैरेक्टरिस्टिक। So moving forward, the repertory starts with the chapter on mind and disposition and ends with the chapter on drug relationship along with the complete index of localities and terms. The organ-wise classification follows Hahnemann's schema till chapter 34. The remaining chapter actually represent the reaction of the whole body.
The organ-wise classification follows the following order. Obviously, it is based on Hering's law only, which is above downwards, from within outwards. Functional symptoms first, which are followed by organic conditions. Then first the parts and then the whole body. So as in the guiding symptoms, so in the repertory, original readings, the words of the prover and the clinician are preserved to the letter. It is being thought preferable to retain the most delicate shades of meaning, occasionally even different wordings of the same symptoms also, by taking refuge in an extra rubric or cross-reference, fuse or commingle in a vague generalization at the sacrifice of individuality. So this repertory is a faithful reproduction of the guiding symptoms. Its content classified and indexed, but it can no way can take the place of the larger work. So in a repertory, we have separation by analysis for the purpose of classification and ready reference. And in the Materia Vedica, we are having a synthesis which enable us to study the drug effects in their grand unity and relationship. तो जब आप मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे, हेरिस मटीरिया मेडिका वो वॉल्यूमिनस है, काफी इलेबोरेटेड है, उसमें एक रेमेडी को आप डिटेल में ना ग्रैंड यूनिटी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके रिलेशनशिप्स के साथ. और जब आप रिपर्टरी पे आते हैं तो रिपर्टरी वो अलग अलग सिम्टम्स को मेडिसिन के एनालिसिस कर देती है, जहां से आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं. Dr. Knerr, he has mentioned his gratefulness to those who also have helped him bringing the world to completion, like Dr. Gurense, Dr. Philip, Dr. Doughty, Messrs, Ziegler and Field. So lastly, the abbreviations of 400 drugs are given, and it is starting from Aedes nigra to Zizia aurea. According to author, he has given a very beautiful quote. It is saying, we have only given the precious stones their settings. They have come from many mines. They have received the polish of years of clinical verification at the hands of our practitioners. Some shine with more brilliancy than others. All reflect the light of wisdom by which we are guided in healing the sick. Very beautifully written. So given the precious stones means the symptoms of the materia medica. उनको एक setting दी गई है. They are a precious stone for our pathy, and they have come from many different minds, different stalwarts के experiences से आया है, and they have received the polish of years of clinical verification. बहुत सारे practitioners ने ये जो symptoms हैं बार बार verify करे हैं, बार बार उन पे clinically जो experience किया है verify करके हमें बताया कि ये सच में मिलता है. इसलिए कुछ symptoms जो हैं वो they are shine with more brilliancy than the others. And all symptoms are actually the light of wisdom by which we are guided in healing the sick. So after reading all these, after understanding the basic concept of Knerr repertory, what are the merits now? First point, obviously, it is useful as a book of reference to find the desired symptom together with the indicated remedy. As it is, कोई symptom हमें patient दे रहा है, उसी language में हमें ढूंढना है तो Knerr repertory से refer कर सकते हैं. The symptoms are given in their original form without much change. Symptoms are arranged in the same language as they have been noted during proving, cures or other sources. Symptoms are arranged in alphabetical order under each chapter, and there are 408 remedies they are in the repertory. There are 4 grading of the symptoms which help us to understand the relative importance of drugs in the concerned symptom. And the cross references are also given as we have studied. One symptom can be referred to at more than one place. Additional chapters are given in this book which are not found in any other repertory. There are special chapters like pregnancy, parturition, lactation, heart, pulse and circulation. We have limbs in general. Exclusive chapter on the modalities related to rest, position and motion. Exclusive chapter on nerves, time modalities. Very unique chapter on temperature and weather, attacks, periodicity, locality and direction, tissues, touch, passive motion and injuries, and very important chapter which is stages of life and constitution, where different age groups, rubrics related to different constitution, rubrics related to different occupations, different temperaments are given in this. This is a very unique chapter of Knerr repertory. It is used for studying materia medica also, mainly used for the research purpose. This repertory is very well authenticated because it is based on Dr. Harris' guiding symptoms. So all the symptoms or rubrics are well verified. It has many pathological rubrics also. It is mainly based on
concomitant symptoms. It has additional supplementary index as we have seen it. It can be used as a clinical repertory also, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे clinical rubric हैं associated with age, sex and pathology, और different clinical pathologies के ऊपर exclusive chapter हैं, जैसे कि tissues, emaciation, convulsions, hydrocephalus, helminthiasis, Bright's disease, cachexia, इस तरह के जो different clinical rubrics की वजह से हम इसको clinical repertory की तरह भी use कर सकते हैं. This repertory is now available in HomePass software. This is the biggest merit in recent history of repertory, क्योंकि नर repertory में इतने सारे symbols use थे, typography use नहीं थी, grading नहीं थी, तो आप इसे systematic repertorization में use नहीं कर पा रहे थे, calculations नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन्हीं symbols को कहीं ना कहीं with clinical experiences इसको convert कर दिया गया है grading में, scoring में, और अभी HomePass सॉफ्टवेयर में नर रिपर्टरी अवेलेबल है, और क्योंकि सॉफ्टवेयर में आ गई है तो नाउ वी हैव एन एक्सेस टू इट. हम इसको इजीली अपने रिपर्टराइजेशन में व्हेन वी आर डूइंग इट विद द इंटीग्रेटेड अप्रोच वी कैन यूज इट्स रूब्रिक्स. सो नर रिपर्टरी अब काफ़ी यूज होने लगी है. कंकॉर्डेंस रिपर्टरी का एक मेरिट ये है, दे हैव नो डिस्टिंक्ट फिलॉसफी इन देयर कंस्ट्रक्शन, so they do not follow any principle for forming a repertorial totality during the process of repertorization, so it is very easy to use. Now we come to the demerits also. What will be the demerits of this repertory? The first point is this repertory is useful only for the reference work, not useful for systematic repertorization of a case. The abbreviations given for the medicines are somewhat different from other books, so that create confusion among the users. No grading in marks present, so not useful for actual mathematical repertorization. If you are using it manually, it is not used for mathematical repertorization. As the rubrics are given in prover's language, this is the very important point. The thing is, जो इसका मेरिट है कि सेम लैंग्वेज जो प्रूविंग में मिली या पेशेंट हमें दे रहा है वैसा एज इट इज हमें वो रूब्रिक रिपर्टरी में मिल जाता है, लेकिन यही सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जब रूब्रिक्स के जो फाइनर शेड्स होते हैं वो हमें मुश्किल होते हैं. Like rubrics are given in prover language, but the different shades of the same expression, they are not seen, which are very difficult to differentiate. तो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट अपनी फीलिंग को उसी तरीके से बताए. तो जो फाइनर शेड्स होते हैं रूब्रिक के वो हमें फिर मुश्किल होते हैं ढूंढने समझने. It has very less number of medicines given which needs upgradation. The layout is overly complex. If you have seen the screenshots of the book, कहीं ना कहीं वो इतना complexity है उसको देखने में, उसमें इतने सारे वो रूब्रिक्स बार बार लिखे गए हैं, बहुत सारे सिंबल यूज हैं, बहुत सारे उसमें वो लाइंस में जो रेमेडीज, हर रेमेडी के आगे लाइंस लगी हुई हैं, तो वो देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट वन इंस्टेंस. Although with the advent of computer, much of this difficulty has been overcome now. And the last point is this repertory is not used for quick and useful repertorial analysis. So this is here we will stop now, and we will discuss its different chapters in the next lecture. Thank you so much.